Yes, hello everyone. Am I audible? Yes, hello guys. Am I audible to everyone? You can write yes, no in the chat box. Okay. Okay, guys. We will just start in 2 minutes. Okay. Let us wait for others to join. Okay. Till then, can you guys tell me your name and from where you are and what are you doing currently? You're studying, working. If you're studying, can you give your college name and what degree you are pursuing. Yes, hello everyone. May I know your names and from where do you belong? College name and degree. Okay, Sanjay, you have completed your graduations 4 day ago, and you are from Rajasthan. Okay. Yes. What about others? Okay. Hi, Venezuela. From where are you from? And what are you doing currently? Okay, you are from Noida, right? Okay, you are from Pune, right? सर्टिफिकेट मिलेगा बताओ सर मिलेगा ना सर्टिफिकेट लेकिन वेबिनार के बाद मिलेगा My name is Amit. I'm you are in second year and I am from Haryana. Okay, okay, Amit. Hello. Sarthak Tiwari from Noida. Okay, hello, Sarthak. I guess north side people are there. Noida, Rajasthan. Okay.
Okay, you are from Maharashtra, Mahesh. Okay, hello, Mahesh. Yes, hello, Kushi. Okay, you are from Jalandhar, Altaf. Okay, from Punjab. Okay, hello, Dharamveer. Yes, yes, very good evening. Okay, Rishika, you are from Dhanbad, right? Jamshedpur, Jharkhand. Okay, good. So I guess from all other states, people are there. Yes, good evening, Vinod. Okay, you are from Nagpur, right? Okay, Andhra Pradesh. आपका वेबिनार स्किल्स फुल होता है सर, थैंक यू अल्ताफ. Okay, you are from Hapur, right? Uttar Pradesh. Okay. Yes, guys, we will just start in 2 minutes. Okay, it's time to start the project for today. Uttarakhand. Okay, nice. Yes, yes. Thank you, Altaf. Thank you for attending my webinars. Yes, very good evening. Dehradun. Okay, one more from Uttarakhand. Good evening, sir. Yes, good evening, Ashwa. Maharashtra. Okay. Yes, good evening. Uttar Pradesh. Punjab. Bhopal. Okay. Bengaluru. Indore, MP. Okay, nice. Odisha. Pune. Gujarat. Okay, yes. Hello, hello, Rakesh. You are from Bihar. Right. Hyderabad. Okay. Okay, now just tell me your language preferences. Shall we continue this webinar in Hindi or in English? Majority wins. English, English. Yes. Hindi, Telugu. English, English, English. Hindi or English. Hindi, Hindi. English. Okay, okay. Okay, I will take this webinar both in Hindi and English, I guess. Okay, there are mixed people here. Okay, both. Okay, okay. We will go with both the languages, right? Okay, okay. So now let us discuss about today's agenda, right? What we are going to do today. Okay. So today, as you all know, the title of our webinar is build lightweight applications, right? So how you can build a lightweight applications? Okay, in applications you don't need to means take tensions about the servers and the databases, right? So you can say you can use APIs for creating lightweight applications. Okay. So let us just take a overview of an application. What does an application consist of? Then we will see what we are going to build today. Okay. So मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर क्या होता है. तो उस आर्किटेक्चर के बेसिस पर आप समझ पाओगे कि हम आज क्या करने वाले हैं सेशन. ओके. So I'm sharing my screen. Give me a minute. Okay. And okay. So I'm sharing my screen. Okay, just give me a thumb if my screen
is visible to everyone? आएगा समझ में, ठीक है? ध्यान ध्यान से सुनोगे और देखोगे तो आएगा समझ में, ठीक है? Okay, so let us see what we are going to build today. So we are going to build a front end. Okay, so if you are from engineering background, अगर आप engineering background से हैं, तो आपने कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट पढ़ा होगा, राइट? और कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट में आप एक मॉडल पढ़ते हो दैट इज क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल. ओके, so in computer network subject we have one model that is called client and server model. Okay, and based on this model we build all our web applications, we build all our websites following this model. Okay, इस मॉडल का यूज करके हम अपनी वेब एप्लीकेशंस वेबसाइट्स सब कुछ बनाते हैं. Then there are two more things. One is APIs and other one are the databases. Okay. So we have four components here. चार component है हमारे पास. एक client होता है, इसको आप front end भी बोलते हो client को. Okay. Then there are APIs. APIs are the interfaces which connect client and server. Okay. So API आप बोल सकते हो ये connector होते हैं जो front end और back end को connect में रखते हैं. Right, connect करते हैं. देन सर्वर और डेटाबेस भी होता है. ओके, सर्वर मतलब हमारा बिजनेस लॉजिक जो भी चीजें हैं वो पीछे प्रोसेस होती रहेंगी और हमारे पास डेटाबेसेस होते हैं. वी हैव डेटाबेसेस, राइट, which consist of all the data of our application. So we are not going to focus on this part today. Okay, in my previous webinar, मैंने जब अपना पिछला वेबिनार लिया था तब मैंने ये तीनों चीजें ही आपको बताई थी, एपीआई, सर्वर एंड डेटाबेस. उस समय मैंने क्लाइंट नहीं बताया. Okay. So now in this webinar, we are going to focus on our client. Okay, so we are not going to focus on these things, right? Instead, we will surely use APIs. Okay, which are connected to some server and to some databases. Okay, so we will see free APIs that we are going to use today. Okay, so there are many free APIs over the internet. इंटरनेट पे आपको बहुत सारी फ्री एपीआईज मिल जाएंगी जो आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं. सो ऐसी ही कुछ एपीआईज हम आज देखने वाले हैं. एंड वी आर गोइंग टू बिल्ड अ क्लाइंट. हम एक फ्रंट एंड बनाने वाले हैं एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट से, जिसमें हम एपीआईज को कॉल करके कोई भी सर्वर और डेटाबेस से जो कनेक्टेड है और उनका डेटा हम अपने फ्रंट एंड पर दिखाएंगे. ओके, सो we don't have to take tension about the the server and the database. Okay, they are ready made, they are pre-built. Okay, we just have to focus on the client, how we are going to fetch the data from the server and database and how you are going to display your data on your front end, right? Yes, ये वीडियो रहेगा यूट्यूब में एंड I hope you guys got it what we are going to do today. Okay, so just give me a thumbs up guys if you got the idea आज हम क्या बनाने वाले हैं. Okay, okay, right. So in this webinar, I will give you the idea of three web applications. Okay, मैं आपको इस webinar में आज तीन web applications बनवा दूंगा. Right. Then let us see some free APIs first. So first of all, we are going to make one advice app. Okay, so मैं आज एक advice app बनाने वाला हूँ. तो एक बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कोई एडवाइस मिलेगी. Okay. So let us search for that API. So if I write advice API, so you can see this free API, okay, for fetching advices from some random server. So you can see this is our API. So API is simply a URL, okay, which connects you to some services or to some server, right? So let us copy this URL and if I paste this URL inside my browser, so you can see I am getting one advice, right? So let us refresh it. Okay, so when I'm refreshing it, so you can see I'm getting some different advice. Okay, quality beats quantity. So this is some API, right, which we are calling, which is connected to some server and some database, and from there we are fetching this data. Okay.
We just need to call this API into our front end and we just have to display some data. So on my desktop, I will create a folder, advice app. Okay, so I will name this folder as advice app and open this folder in VS Code. Okay, and I may tell you that you need some basic knowledge of HTML, CSS, and JavaScript for doing all these things, right? So you can create one file and name it as index.html. Okay, and make another file and name it as script.js. We will create one JavaScript file also, right? Then we will write some boilerplate code, and inside this we will change our title, this advice app, and in the body I will make one button. And when clicking this button, we will get some advice. Okay, so in this button I am writing get advice. Let us go live and see that what happens. Okay, let us keep these things side by side. So you can see I'm getting one button, get advice, right? But nothing is happening while I'm clicking this button. So if you want something happens on clicking this button, just add one event that is on click. Okay. So whenever this button is clicked, we need something to happen, right? Now let us give one script also, script tag. We will embed our script. Okay, dot slash and script dot js, right? ओके, जिनको नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश में, मैं एक बार हिंदी में बता देता हूँ। मैंने एक एचटीएमएल की फाइल बनाई है और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है। एचटीएमएल की फाइल में वही सिंपल बेसिक सा कोड दिया है जो आप हर वेब पेज पर लिखते हो, और मैंने यहाँ पर एक बटन बनाया है जिस पर मैंने लिखा हुआ है गेट एडवाइस। सो इस बटन पर जब भी हम क्लिक करेंगे, ओके, यू विल गेट दैट एडवाइस जो अभी हम यहाँ से ले रहे थे, ओके, व्हाइल कॉलिंग दिस एपीआई। और मैंने अपने वेब पेज में स्क्रिप्ट को इंटीग्रेट कर दिया। ओके, आई हैव एम्बेडेड माय स्क्रिप्ट फाइल इनटू दिस वेब पेज, राइट? और यहाँ पर बटन में मैंने एक ऑन क्लिक एट्रीब्यूट दिया है। ओके, सो मैं इस बटन में एक इवेंट डाल रहा हूँ कि जब भी ये बटन क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए, राइट? सो वो हम स्क्रिप्ट में बता देते हैं कि क्या होना चाहिए। सो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। सो आई विल मेक वन फंक्शन, राइट? And let us name this function as fetch advice. Okay, so we will fetch some advice from some API, right? I will make it a function. Okay, now inside this function, let us make one variable. Okay, so I am making const variable, and let us say response, right? So I am making one variable named response. In this, I will store this response, okay, which is coming from this API whenever we will call it, right? So let us call that API. So fetch, and fetch is a method, and inside this method, you can pass that URL. So let us copy this, and you can simply paste URL here, right? So एक वेरिएबल मैंने बनाया है, एक फंक्शन मैंने बनाया है गेट एडवाइस नाम से, और इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो रिस्पॉन्स आएगा एपीआई से उसको स्टोर कर रहा हूँ। ओके, और हम एपीआई को कॉल कैसे कर रहे हैं? ब्राउज़र पे तो मेरे पास यूआरएल बार होता है, यहाँ पर तो मैं यूआरएल डालकर चला सकता हूँ, बट जावास्क्रिप्ट में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता है। सो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास फेच फंक्शन होता है, क्योंकि ये इनबिल्ट है जावास्क्रिप्ट का, ये पहले से होता है जावास्क्रिप्ट में। और इस फंक्शन में आप क्या कर सकते हो, आप अपना यूआरएल डाल सकते हो, ओके, और जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, राइट? नाउ लेट अस print this variable. So let us write console log response. Okay, and now let us see if we get any response. And I forgot to call this function inside my event. Okay, so here we will call that function get advice. Okay, fetch advice. Sorry, fetch advice, and it is a function. So call it, right. Now let us see what will happen. Okay, let us go to the console. Let us click this get advice button, and
Okay, you can see I'm getting some promise, right? So promise pending. Okay. So why this type of thing is coming? Now let us go back to our diagram. Okay, whenever we will call an API, so it will take some time. Okay, it will go to the server, then server will go to the database, then database will give some advice to server, then server will give advice to API, then API will give advice to us, right? So this is an asynchronous work, right? So APIs will take some time for going into servers and databases. Okay. So API यहाँ पर टाइम लेगी डेटा लाने में, ध्यान रखना ये आप लोग। ओके, जब भी आप किसी एपीआई को कॉल करते हो, वो थोड़ा ना समय लेगी क्योंकि वो सर्वर पर भी जाएगी, डेटाबेस पर भी जाएगी। डेटाबेस से फिर हम कुछ डेटा फेच करेंगे, वो सर्वर में आएगा, फिर सर्वर एपीआई को डेटाबेस देगा, फिर एपीआई हमको वो डेटा देगी, राइट? सो थोड़ा टाइम लगने वाला है इस चीज़। सो दैट इज़ व्हाई वो यहाँ पर मुझे बता रहे हैं कि कोई प्रॉमिस है जो पेंडिंग, राइट? सो हमें एसिंक्रोनस बनाना होगा हमारे फंक्शन को, ओके? सो लेट अस मेक इट async. So if you want to make your function asynchronous, it is very simple. Just to give async keyword before the function, and the function or the operations which are taking time, just add a wait keyword in front of it. Okay. So now this will wait for this API to fetch the data. Okay. अब मैंने यहाँ पर async और await ऐड कर दिया है, तो इससे क्या होगा, अब ये जो fetch फंक्शन जो कुछ टाइम ले रहा है इस एपीआई से डेटा लाने में, ओके, ये वेट करेगा अब थोड़ा, ओके, जब तक रिस्पॉन्स नहीं आ जाता, राइट? सो नाउ लेट अस सी, लेट अस क्लिक ऑन इंस्पेक्ट, और अब हम देखते हैं कि वो चीजें हमारे पास आ रही है या नहीं आ रही है। सो इफ आई क्लिक ऑन गेट एडवाइस, okay, now you can see I'm getting some response. Okay, so there is one body also, right? It is a readable stream. Okay, so I'm getting some response from that API. Okay. You can also see the status 200. Okay, that means successful response, right? This is the URL on which we are sending the request. Okay, and it is true. Okay, okay means our response is true, right? So we are getting some data. Now we need to fetch the data, right? So we need to convert our data into JSON objects, right? So once more, I will make one variable const, and let us name it as advice object. Okay. So we will get one object. So if you have worked on languages like Java or C++, then you should be familiar with the objects, right? What are objects? So we will get that object in this variable, and let us give equal to and await. Now I will write response. Okay, the variable in which my response is coming. And in this response, I will attach one JSON function which will convert this data into JSON object. Okay. So for your kind information, client and server communicate in JSON objects, in JSON data, right? So that is why we are converting this into JSON. Now instead of console logging response, let us console log advice object. Okay. And let us see now. Click on inspect and go to console. Click on the get advice button. Now you can see I'm getting one object, advice object. Let us collapse it. And inside this, you are getting one slip. Okay, slip key is there. And inside this slip, we are getting this advice. Okay, drink a glass of water before meals. Okay, so it is a advice. We are also getting some ID for some advices, right? So inside my object, I have slip, and inside the slip, I have advice, in which I have my advice data. So let us access it. So here I can write advice object dot slip dot advice. Okay. Now if I see it, so now if I click on get advice button, so now you can see I'm getting the advice. Never set an alarm clock unless you know how to switch it off. Okay, so it is a very good advice. Now let us use this advice and render it on our screen, display it on our screen. So for this, I will use some DOM manipulation. Okay. So here, let us build one h1. Okay. So I will make one h1 tag heading 1, and inside this I will give one ID, and we can give this as advice. Okay.
So now target that element. So const advice is equals to document. Okay, so what is document? Document is simply our this HTML document. Okay, so this is our HTML document. So inside this document, what we need get element by ID. Okay, so inside this document, we will get an element which will have some ID. Okay, so this element have some ID, and what is the ID? Advice, right? So let us give that ID inside this method. So if I give advice, now let us console log it. So if I console log advice, so now let us delete this and let us see what we are getting in this advice variable. So go to the browser. Now click on get advice. So you can see I'm getting that H1 which have that ID advice. So inside this H1 we want to put our advice. So give advice dot inner HTML. Okay, is equals to, here you can give your advice. So advice object dot slip dot advice. Right. Now let us delete it. So now let us see if we are going to get some advice on our console or not. Okay, no, not on console, on our screen. So now if I click on get advice button, so you can see I'm getting some advice. Okay, click it again. Okay, another advice. Click it one more time. Okay, another advice. Then if you click it one more time, then we are getting another advice. Right. So this thing you can do in almost every application. Okay, you can fetch some API data and show it on your application. This is how you make your applications lightweight. You don't worry about the servers and the database that you are going to use inside your application. Okay, so uh, everyone got it. Just give me a thumbs up or anything else, or if you don't get it, so tell me the point that you where you didn't get it, right? संजय, आप भी साथ में बना सकते हो कि अगर आप मेरी स्पीड से मैच अप कर सकते हो तो, एंड इफ यू डोंट मैच अप विथ माय स्पीड सो आप बाद में भी इसको देख सकते हो. ओके, ओके, आई गेट मोस्ट ऑफ द पीपल आर गेटिंग इट, राइट. Now we can also make our application more dynamic also. Okay, so how we can make it more dynamic? Suppose we can give one paragraph. Okay, so let us give one p tag, and inside this let us give one ID, and here we will see the count. Okay, how many advices we have read. Okay, so कितनी advices हमने पढ़ ली हैं ये हम इस paragraph tag में डालने वाले हैं. So अब यहाँ पर मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा. ओके, so let us make one variable, let count. Okay, so it is a simple count that you use in for loop, while loop. Okay, so count, let count is equals to 0, and whenever this function is called and whenever this API is called, so after this I want to increase that count, so count plus plus, right. Now what we can do, we can make another variable, const count data. Okay, is equals to, once again select the element by its ID. So again, document dot get element by ID means inside this document we are getting one element with this ID count. So this p tag will be targeted, and inside this p tag, so count data dot inner HTML. So inner HTML is a property inside this p tag. Okay. So inside this p tag, what is inner HTML means this. Okay. So here we are giving some data for it. Okay. So remember this. So count data dot inner HTML is equals to advice count, and you can give that count. Or instead of writing simply this thing, you can also make it more dynamic. Like you have read count pieces of advice today and give an exclamation mark. Okay. So now let us see what will happen in our code.
So, sir, can you explain the flow again? Yes, yes, we will see it again. Okay, once again we will make another app. Then third time also we will make the same app with the same approach. Okay, so don't miss this part. Okay, so see it carefully. So if I click on get advice, you can see the quieter you become, the more you can hear. Okay, it is a good advice. And here I am seeing that count. Okay, so you have read one pieces of advice today. You can make it bold also. Okay, if you want this one to be bold, so let us add it. So here I will make one strong tag. Okay, so if you guys don't know, strong is a tag in HTML by which you can make your content bold, look bold. Okay, so now let us see if we are getting. Okay, so now you can see it is in bold. So you have read one pieces of advice today and get advice. Okay, two pieces of advice today. Okay, three pieces of advice today, then four pieces. So like this you can make your application more and more dynamic also. Okay, and you can see how lightweight this application is. I have just used 7 lines of code, okay, for making this application. So the more less lines of code, the more less complicated your application is, right? And in the HTML also you can see I have just made 3 elements. Okay, now what you have to do, you just have to now style it through CSS. Okay, so this webinar is not focused on CSS, so I'm not going to take time and style it for you. Okay, so you can apply CSS and make it more stylish if you want, right? Okay, yes, this video will be uploaded. Okay, now let us move to our next application. One application is completed. Okay, now our next application will be jokes API. Okay, so we will make one joke application which will give us jokes like advices, right? Now, advice API was a little simpler. Okay. Now the joke API, now what we are going to use, it is a little bit typical. Okay, how it is typical? Because there are different categories of jokes. You can see programming jokes are there, mixed jokes are there, dark jokes are also there, pun jokes are there, spooky and Christmas jokes are also there. Okay. So we have different categories of jokes, right? Then you can also blacklist some type of jokes, like if you don't want religious jokes, if you don't want political jokes, racist jokes, sexist jokes, so you can blacklist them. Okay, now there are types of jokes also, single part joke or two part joke. Okay, so this in this API you need some logic to handle all this data. Okay, so let us copy this API. So this is our API. Okay, so copy it. Now I will make another folder. Okay, so advice app is completed. Jokes app. Okay, once again open this folder in VS Code. Let us close this advice application. Okay, here also make one index.html. Okay, and make one script.js. Okay, so I have made two files here. Right inside the index.html, once again we will give the same boilerplate code. Okay, and now change the title to jokes app, and here same strategy. Okay, button get joke button. Okay, same here we will give on click. Okay, and fetch joke function. Okay, just like we have fetch advice, and there will be one script tag. Okay, for now I'm not adding anything else, just one button and one script tag. Okay, src dot slash script dot js. Okay, make the async function. So async function fetch joke. Okay, and here you can same strategy. Const response is equals to await fetch, and fetch is a function, and inside this function you can paste your
jokes API, and make you will get one joke object instead of advice object. Okay, so response.json, and okay, we are making another variable. Okay, so let us see. So const joke is equals to. Okay, so this line is little bit tricky. Okay, we have some, you can say, some logic behind this. Okay, this thing is called short circuiting in JavaScript. Okay, so we are using a OR operator here. So why we are using a OR operator? Okay, let us first of all see what we are getting in joke object. Okay, let us comment this line. We will understand this line afterwards. Okay, so let us console log and see what we are getting on the screen. So joke object, and everything is done here. Here also. Okay, now let us see. Sorry, go live, run it. Okay, so here let us click on inspect and go to console, and let us see what we are getting. So if I click on get jokes, you can see one category is there. Okay, pun joke, and one delivery is there, and one setup is also there. Okay, so this is a two-part joke. You can see type is two-part. Okay, and once again, if we click on get joke, so you can see this is a dark joke. Okay, so this is a programming joke. This is also a two-part joke. Once again, okay. Then you can see this is a single joke. So inside the single joke, you will get only a single joke object. Sorry, joke property. And inside two-part joke, you will get a setup and a delivery. Okay. So this is why we are writing those lines. Okay. So let us uncomment it. So understand, we are making a variable joke. Let us delete this console log. So joke. So if joke object means this object, if contains a joke property, then joke will be this thing. Or if this does not exist, means if joke doesn't exist, then it means it is a two-part joke, and we will just print the setup and the delivery. Okay. So if you are familiar with JavaScript, if you are familiar with objects, if you are familiar with short circuiting, so you will be able to get this line right. Now let us console log the job. Okay, so let us see what we are getting in the joke. So now inspect, and the dev tools are there. Get joke. So you can see. Okay, so it is a programming joke. Can I tell you a TCP joke? Yes, please tell me a TCP joke. Okay, I'll tell you a TCP joke. Okay, get joke. Okay, so get joke. So here also now we are getting different types of jokes. Simply print these jokes on the screen. Okay, here also we will make one H1. Same strategy. Okay, ID joke, and here target that element. So yeah, I will do it directly this time. Okay, so document dot get element by id joke dot inner text, or you can write inner html as joke, and you can make one paragraph also to count how many jokes you have read. Okay, so id, it is again the count, and here we can make a count variable just like before. So let count is equals to 0, and here after converting to JSON, we will increase our count. Okay, so count plus plus. Now here we will target that element. So document dot get element by count jokes fetched, or you can simply write you have read. Okay, just like the previous version. So you have read count pieces of jokes today. Right. Now let us go to the browser, click on inspect. Okay, now let us see if I click on get joke. Okay, so get joke. So you can see. Okay, and one pieces of jokes. Okay, so I am getting now jokes also. Okay, so this is how you can fetch jokes also.
Okay. Okay. So this is how you can make this. And one more thing, you can make this joke API more dynamic also. Okay, how? As we have seen, there are different categories of joke, right? So here you can make one select option. Okay. So select, and we will leave the ID as it is. And inside this, we will give some options. Okay. So suppose if you want any kind of joke, okay, so we will give the value as any. Okay, now suppose if you want programming joke, so we will make one category as programming. Okay, here also we will write programming. Okay, suppose you want dark jokes or fun jokes, so you can give that category also. Right. And now let us see. Okay, so you can see I'm getting categories also. So you can select any category, and if you click on get joke, so that kind of category joke will be displayed. Right. So you can also make this dynamic. You can give some ID category. Okay, and let us go to script and let us make one category. So let category is equals to, okay, by default we give the category as any. Suppose if a user doesn't select any category, so by default any category will be selected. And in here instead of any, let us make this dynamic. So here I will give, okay, like this also I can make it. So plus category. Okay. So you can see there it is giving me more categories, right? So this is my VS integrated AI, VS Code AI. Okay. And now what we need to do? Yes, we need to fetch the category now. Okay. So here we can get it. So const, not const, category. Okay. So document dot category dot value. So let us see if we get that value or not. So here, okay, now on change, we have to give some on change attribute here. Okay, so whenever this category will change, so what we need another function. Okay, so we will make one function that is set category. Okay, so inside this function, we will keep this thing. Okay, so whenever that category will change, we will get the category. Okay, and let us print it console log category. So category. Now let us see if we get any category on our screen. So inspect console. Now if I click on programming, not getting anything. Let us see what is the issue. Okay, on change I haven't give the function name. Okay, so it is set category. Okay, set category. Now let us see if I click on programming. So you can see programming is coming. If I click on dark, you can see dark is coming. Okay, let us select the programming and click on get joke. So you can see now I will only get the programming jokes. Okay, so the more you use these parameters, the more you can make your programs dynamic. Okay. So once again, go to the jokes documentation. So jokes API, and if you see, so see, I have implemented this part only. Okay, so user can select any category or custom category. You can implement this also, which jokes to blacklist. You can implement this also. You need a single or two part joke. So it depends on your creativity and idea. Okay, how you are going to do it, right? Okay, now how much time is left? Okay, we have only 3 minutes. Sorry, we have only 20 minutes, let us say. So two applications we have completed, right? So everyone got it. Any doubts in these two applications?
Yes, if everyone is watching, how many people are doing it along with me? Okay, if you are doing along with me, then at the end of the webinar, I will also show you how to deploy these applications. Okay, so maintain till the end. Okay, don't leave in between. Certificate, how to get certificate you will get after this webinar. Okay, okay, okay. Yes, guys, send some reactions. Give me some thumbs up. Give me some likes. Right, right. Okay, okay. Thank you so much, guys. Okay, now we will go to our next application. Okay, so what will be our next application? Next application is little bit interesting. Okay, you are going to make a movie website. Okay, which have all the posters, titles, ratings, cast of the movies. So for that we need another API. Okay, so let us search for another free API. So if you want APIs for your application, you can go to Rapid API. So let us see what is Rapid API. So Rapid API is a marketplace for API. Okay, here you can find any API, whether you want to build YouTube, whether you want to build IMDb, whether you want to build Yahoo, you want to build Google, any API you can get here. Okay, so you just need to sign in. Okay, so if you don't have the account, just make an account and you can simply sign in. Okay, so I will sign in with my account. Okay, so now you can see that okay, and Rapid Technology is acquired by Nokia. Okay, so Nokia ने इसको खरीद लिया है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि आपको देखो कितनी सारी फ्री एपीआईज़ मिल रही हैं। ओके, जॉब्स की एपीआई, खुद का लिंक्डइन बनाना है, खुद का नौकरी बनाना है, खुद का फेसबुक बनाना है। सो सारी एपीआईज़ है, ट्विटर, यूट्यूब बनाना है, जैसा मैंने बोला था, इंस्टाग्राम बनाना है। एपीआई का यूज़ करना आना चाहिए बस, ठीक है? सब कुछ बना लोगे। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए था, मूवीज़ से रिलेटेड कुछ एपीआई चाहिए। सो आईएमडीबी सर्च करते हैं। आईएमडीबी की कोई एपीआई है क्या मूवीज़ वगैरह के लिए? तो देखते हैं। ओके, हियर इट इज़ आईएमडीबी। ओके, और यहाँ पर भी है मूवीज़। ओके, यहाँ पर क्या लिख रहा है? न्यूज़ एंड मीडिया। और यहाँ पर लिख रहा है मूवीज़, कैटेगरी मूवीज़। मतलब यहाँ पे मुझे आईएमडीबी का डेटा मिलेगा। यू कैन सी अ लाइटनिंग फास्ट एपीआई फॉर एक्सेसिंग आईएमडीबी डेटा। इसकी लेटेंसी भी काफ़ी अच्छी है, 9.9। ओके, और पिंग भी ठीक है, पिंग भी ठीक है, और ठीक है, इसको यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं। ठीक है, बहुत टाइम लगता है यहाँ पर एपीआईज़ ढूँढने में। ठीक है, सो मुझे जो भी अभी मिल रहा है मैं बता देता हूँ। अब आपने यहाँ पर देख ली हैं ये एपीआईज़, तो इस एपीआईज़ पर आप क्या-क्या कर सकते हो देखो। मूवीज़ में अगर आप देखोगे, सो आप टॉप 250 मूवीज़ फेच कर सकते हो। ओके, आप डिटेल्स ऑफ पर्टिकुलर मूवी, किसी मूवी की आईडी डालकर उसकी डिटेल्स मँगा सकते हो। रेटिंग मँगा सकते हो किसी मूवी की, डायरेक्टर्स मँगा सकते हो किसी मूवी के। ठीक है, सर्च में क्या है, ऑटो सर्च, ऑटो कंप्लीट, टीवी शोज़ भी आ जाते हैं, टॉप 250 टीवी शोज़। तो हम मूवीज़ के ऊपर बनाते हैं अभी, ठीक है, कि 250 टॉप की 250 मूवीज़ मेरे पास आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, टेस्ट एंड पॉइंट। ओके, तो आप यहाँ पर आप टेस्ट एंड पॉइंट देख रहे हो, मतलब ये आपको एपीआई चलाकर बताएगा कि कैसे चलेगी ये। और अगर आपको कोड भी चाहिए, सो यहाँ पर आपके पास टारगेट लिखा है कि मतलब कहाँ पर चलाने वाले हो आप ये कोड। सो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट। ओके, और जावास्क्रिप्ट में हम किसका यूज़ कर रहे हैं? फेच का। सो आपको कोड भी बना हुआ मिल जाता है ना? मज़ेदार चीज़। तो बस टेस्ट एंड पॉइंट पर क्लिक कर दो, और क्या बोलते हैं, अभी हमारे पास रिज़ल्ट्स आ जाएँगे। ठीक है, सो देख रहे हो ये आ गए मेरे पास रिज़ल्ट, 250 आइटम आ रहे हैं मेरे पास एक एरे में, और सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ये। ओके, दिस इज़ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो देखो कौन-कौन सी मूवी आ रही है, शॉशैंक रिडेम्पशन आ रही है मेरे पास, ठीक है? और क्या है देखते हैं। गॉडफ़ादर आ रही है मेरे पास, ठीक है? और क्या आ रही है? डार्क नाइट आ रही है मेरे पास बैटमैन की।
है ना? सो ऐसे करके 250 मूवीज़ आ रही है मेरे पास, राइट? और 200 ओके मतलब चल रही है आपकी एपीआई। सो बस कोड स्निपेट्स पे जाओ, ये पूरा कोड कर लो कॉपी, समझ रहे हो ना? कॉपी करने के बाद और पेस्ट कर दो, सिंपल। ठीक है, एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं इसके लिए। ठीक है, हमने एडवाइस ऐप बनाया, हमने जोक्स ऐप बनाया, मूवी ऐप बनाएँगे अब। मूवी ऐप, ठीक है, सेम इसको भी खोल लो वीएस कोड में। और यहाँ पर भी सेम स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है? और एक बनानी पड़ेगी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, राइट? दोनों मूवीज़ मैंने बना दी है। सॉरी, दोनों फाइल्स मैंने बना दी हैं, दोनों मूवीज़ बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे अ, हमें बॉयलरप्लेट देना है, ठीक है? और यहाँ पर बस स्क्रिप्ट लगा देते हैं अभी के लिए। स्क्रिप्ट और यहाँ पर सोर्स देते हैं एसआरसी डॉट स्लैश स्क्रिप्ट डॉट जेएस से लेना है स्क्रिप्ट का कोड और यहाँ पर अपना कोड पेस्ट कर दो जो हमने वहाँ से उठाया था। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल कोड है देखो, कोई मुश्किल कोड नहीं है। एक यूआरएल का वेरिएबल बनाया है, जिसमें यूआरएल को कॉपी किया है। एक ऑप्शंस ऑब्जेक्ट बनाया है, जिसमें मैंने मेथड बताया कि मुझे गेट करना है डेटा इस एपीआई से और हेडर्स मैंने दिए हैं। हेडर्स देना यहाँ पर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये एपीआईज़ को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, सो सब्सक्राइब आप करोगे तो आपको एपीआई की मिलेगी। सो इस के बिना आप इस एपीआई को यूज़ नहीं कर सकते। ओके, सो दैट इज़ व्हाई वी नीड हेडर्स और यहाँ पर मेरे पास ट्राई एंड कैच ब्लॉक दिया हुआ है। ओके और यहाँ पर मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा है और वो टेक्स्ट में आ रहा है। हम इसको जेसन में यूज़ करेंगे, हम टेक्स्ट में यूज़ नहीं करेंगे। ओके, अब यहाँ पर एक फंक्शन बना लो, सेम एसिंक फंक्शन, ठीक है? फेच टॉप मूवीज़, ठीक है? और हमें क्या डालना है इसके अंदर? यही कोड जो अभी हमने कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, ये ट्राई और कैच वाला ब्लॉक। ठीक है, जावा में काम किया होगा तो ट्राई कैच भी पता होगा आपको। ठीक है, सो कॉन्स रिस्पांस इज़ इक्वल्स टू फेच यूआरएल हमने पास कर दिया ये यूआरएल हमने ऑप्शंस भी पास कर दिए साथ में और यहाँ पर मुझे अब टेक्स्ट में नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर जेसन में चाहिए। ठीक है, और कंसोल लॉग करके देखते हैं रिज़ल्ट। ठीक है, और हाँ, बटन तो बना ही नहीं। ठीक है, बटन बना भी सकते हो, बटन नहीं बनाना तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी बटन बना लेता हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं आपको बताऊँगा कि हम कैसा करेंगे कि जैसे ही मेरा वेब पेज लोड होगा, कोई भी मेरा वेब पेज खोलेगा उसको 250 मूवीज़ दिख जाएँगी लिस्ट में, ऐसा कुछ मैं बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर बटन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अभी बटन मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं चेक कर सकूँ, ठीक है, मेरी एपीआई वगैरह को टेस्ट कर सकूँ, राइट। और यहाँ पर चला दो ऑन क्लिक, ठीक है, और यहाँ पे कौन-सा फंक्शन चलाना है फेच टॉप मूवीज़, ठीक है? और क्या बोलते हैं, गो लाइव कर दो इसको, ठीक है? गेट मूवीज़ आ रहा है, इसको इंस्पेक्ट करके देखो ज़रा हमारे पास 250 मूवीज़ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है? सो कंसोल गेट मूवीज़, सो देखो आ रही है मेरे पास 250 मूवीज़ एंड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओके। सो ये देखो 0 से 99 पेजिनेटेड आ रहा है मेरे पास रिस्पॉन्स, राइट? सी ओके हर मूवी का क्या-क्या है देखो, हर मूवी का बजट भी आ रहा है, एवरेज रेटिंग आ रही है, ओके और डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है कि क्या है मूवी के अंदर, ठीक है? और क्या बोलते हैं, यूआरएल भी आ रहा है आईएमडीबी का, यूट्यूब पर ट्रेलर देखने का लिंक भी आ रहा है ना? और प्राइमरी टाइटल भी आ रहा है, प्राइमरी इमेज भी आ रही है, राइट? सो बस अब क्या करना है, ये मूवीज़ को दिखा देना है वेब पेज पर। सो अब इसका थोड़ा-सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है? फेच टॉप मूवीज़, सो जैसे ही मूवीज़ फेच हो जाए, सो मैं क्या चाहता हूँ, ओके, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ मूवीज़, ओके, कॉन्स्ट मूवीज़। तो अब मुझे क्या करना है, मूवीज़ डॉट मैप, ठीक है? मैं यहाँ पर अब मैप मेथड क्यों चला रहा हूँ, तो मैप मेथड मेरे को किसमें हेल्प करेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था मेरे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ रही है। सो एरे को आइटरेट करने के लिए हम यहाँ पर मैप ऑब्जेक्ट चला रहे हैं। सो हर बार हमारे पास एक मूवी ऑब्जेक्ट निकल कर आएगा।
लेकिन उससे पहले मैं एक डिव बना लेना चाहता हूँ। सो ये बटन तो मैं वैसे ही नहीं रखने वाला, सो बटन को तो हटा ही देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर चाहता हूँ ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं बॉडी में डायरेक्ट डालूँगा कार्ड्स। मैं मूवी के कार्ड्स बना रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन आएगा, सो आई विल मेक वन एरो फंक्शन, राइट? और जब भी हम मूवीज़ को मैप करेंगे, सो एक मूवी निकल कर आएगी आपके पास। नाउ हियर वी विल मेक आवर कार्ड। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोड मुझे लिख कर दे रहा है, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। सो ये एक वेरिएबल बना रहा है मूवी कार्ड नाम से और उसमें डिव, सो मूवी कार्ड डॉट क्लास लिस्ट डॉट एट मूवी कार्ड, इसमें क्लास दे रहे हैं मूवी कार्ड। मूवी डॉट इमेज आ रही है, ऑल्ट मूवी डॉट टाइटल, मूवी डॉट टाइटल, रेटिंग आ रही है, ईयर आ रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर मूवीज कंटेनर। ठीक है, ये कोड मेरे काम का है। कॉन्स्ट मूवी कार्ड, हम एक मूवी कार्ड बनाएंगे सबसे पहले। सो डॉक्यूमेंट, सेम कौन सा डॉक्यूमेंट, ये हमारा एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में मुझे क्या करना है, क्रिएट एलिमेंट। मैं एक एलिमेंट बनाना चाहता हूँ, क्या बनाना चाहता हूँ मैं, डिव। ओके, इस डिव से मैं कार्ड बनाऊंगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर दे देता हूँ मूवी कार्ड डॉट क्लास नेम। ठीक है, उसने क्लास लिस्ट का यूज़ किया था, हम क्लास नेम का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल बना रहे हैं हम अपने कोड को। ठीक है, और मूवी कार्ड के अंदर अब हम क्या डाल देंगे, एक इमेज डाल रहे हैं देखो, ठीक है, और एक H3 डाल रहे हैं जिसमें मूवी का टाइटल आएगा, एक रेटिंग डाल रहे हैं, एक ईयर डाल रहे हैं, आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, और इस मूवी कार्ड को हमें अपेंड कर देना है। सो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है, बॉडी, बॉडी टैग होता है, देखो आप, डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट के अंदर बॉडी, और इस बॉडी के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, डॉट अपेंड चाइल्ड मूवी कार्ड। ओके, सो और इस फंक्शन को जैसा कि मैंने बताया था, मैं बटन से नहीं चलाऊँगा, अब मैं इस फंक्शन को डायरेक्टली चलाऊँगा। ओके, सो मैं इसको आईआईएफई बना इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन। जैसे ही ये पेज लोड होगा, ये फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो मेरे पास अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर। ओके, चीज़ें आ रही हैं लेकिन कुछ डेटा नहीं आ रहा है मेरे पास। राइट, सो व्हाट इज़ द इश्यू हियर, देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है हमारे पास डेटा। मूवीज़ को हम मैप कर रहे हैं ना, राइट? कंसोल लॉग मूवीज़ करके देखते हैं एक बार, ठीक है, कि मूवीज़ आ भी रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, इंस्पेक्ट कंसोल 404 नॉट फाउंड अनडिफाइंड। ठीक है, देखेंगे इसके बाद में। मूवीज़ तो आ रही है मेरे पास, मूवीज़ तो आ रही हैं, बट ये एरर क्यों आ रही है? कंट्रोल आर रिफ्रेश। ओके, यहाँ पर कुछ है एरर, कैन नॉट गेट स्लैश अनडिफाइंड। ठीक है, समझते हैं इस एरर को। ठीक है, अभी के लिए इस फंक्शन को नहीं चलाते। ठीक है, लेट अस क्रॉस चेक आवर फंक्शन। तो स्क्रिप्ट मैंने चलाई हुई है यहाँ पर, और बॉडी में कार्ड भी बन के आ रहा है, राइट? लेकिन डेटा नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मूवीज़ तो आ रही है, मूवीज़ डॉट मैप। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, ऑप्शनल चेंजिंग से हो जाए। ओके, इसलिए अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि ओके, मैं समझ गया, हमने ऑब्जेक्ट्स में जो कीज़ है उनके नाम सही नहीं रखे, लिखे हुए हैं। ठीक है, ओके, आई गॉट इट। ठीक है, देखते हैं, हमने ऑटो कंप्लीट से कोड लिया था तो उसने हमें परेशान कर दिया। ओके, नाउ लेट अस चेक इट कि डेटा क्या है, उस हिसाब से चेंज करते हैं। ओके, और ओके, एक ऑब्जेक्ट खोल लेते हैं। सो सबसे पहले हम क्या डाल रहे हैं, इमेज डाल रहे हैं हम, राइट? सो इमेज किसमें है, देखो आप यहाँ पे, प्राइमरी इमेज नाम है उसका, इमेज नाम नहीं है। ठीक है, सो प्राइमरी इमेज, और देखो और क्या-क्या है, टाइटल, प्राइमरी टाइटल है वो, टाइटल अकेला नहीं है। ठीक है, सो मूवी प्राइमरी टाइटल। ठीक है, यहाँ पे भी वही आएगा, प्राइमरी टाइटल। रेटिंग, रेटिंग देखो, रेटिंग नाम से कुछ है क्या यहाँ पे?
रेटिंग अपन ने देखी तो थी हमें, एवरेज रेटिंग है वो, एवरेज रेटिंग। और मूवी ईयर, ईयर आ रहा है कि यहाँ पे कहीं स्टार्ट ईयर है यहाँ पे, ठीक है, कब स्टार्ट हुई थी ये मूवी, स्टार्ट ईयर, ठीक है। अब वो डेटा मेरे पास आ जाएगा, आप पूरा डेटा भी दिखा सकते हो, आप ट्रेलर का लिंक भी डाल सकते हो एक ये टैग बना के, ठीक है। पहले हम इतना करके देखते हैं, फिर देखते हैं आगे और क्या-क्या हो सकता है। ठीक है, आ गया सारा डेटा, देखो, ठीक है। अब इन कार्ड्स को थोड़ा-सा हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, राइट? अभी क्या हो रहा है कि सारी चीज़ें बहुत बड़ी-बड़ी दिख रही हैं, सीएसएस नहीं है ना? सो सीएसएस पर थोड़ा काम करते हैं। अब कहाँ है अपना वो क्या बोलते हैं, वीएस कोड। यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पर आप बनाओ एक स्टाइल डॉट सीएसएस, ठीक है। सबसे पहले तो सारी डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स को ओवरराइड कर दो, हर एलिमेंट में मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइज़िंग बॉर्डर बॉक्स कर दो। अब हमने उसका नाम क्या लिया था, एक बार देख लो ज़रा, मूवी कार्ड, ओके। सो मूवी कार्ड को यहाँ पर टारगेट कर लो, डॉट मूवी कार्ड, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ विड्थ लूँगा, विड्थ मैं ले लेता हूँ, लेट अस से 20 आरईएम, हाइट हम लेंगे 25 आरईएम, ठीक है। आपको कुछ बैकग्राउंड कलर लेना हो तो वो भी आप ले सकते हो, लाइट ग्रे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, लाइट ग्रे। और थोड़ा-सा और इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा-सा और लाइट कर दो, राइट। देखते हैं कुछ होता है या नहीं होता है। ठीक है, अभी कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि इमेजेस का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और अभी भी इसलिए भी कुछ नहीं हो रहा है, हमने लिंक ही नहीं की इस टाइम। लिंक डॉट स्लैश स्टाइल डॉट सीएसएस, ठीक है। मेरा फंक्शन बार-बार कॉल ना हो इसलिए अभी इसकी कॉलिंग हटा देता हूँ, मैं पहले स्टाइल कर लूँ। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया है। सारी इमेजेस की मुझे विड्थ लेना है, ओके। विड्थ पहले से दे दी कैसे, विड्थ हमारी मूवी कार्ड की 20 है, तो इमेजेस की हम ले सकते हैं 18 आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे मूवी कार्ड में एक चीज़ और कर दो आप, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो बस। बॉर्डर रेडियस भी दे दो, है ना? और हाइट मत लो, हाइट तो अपने आप आ जाती है। ठीक है, और अब देखते हैं, अब कुछ मुझे दिखना चाहिए अच्छा-सा। और एक, हाँ, एक और चीज़ मैं भूल गया, बॉडी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और सब में गैप दे देंगे 1.5 आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे हिसाब से बन जाएगा सब कुछ, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, सो सी यू कैन सी मेरे पास आ गए सारे मूवी के कार्ड, वेरी गुड, नाइस। ठीक है, लेकिन ये सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम है। फ्लेक्स रैप देना था, फ्लेक्स रैप एंड रैप। ठीक है, अब अच्छी दिखेगी हमारी वेबसाइट, राइट? ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो कि इमेजेस अभी भी बड़ी हो रही है, ठीक है, इमेजेस बाहर निकल रही है मेरे डिस्प्ले से, है ना? तो हम क्या करते हैं, मूवी कार्ड में थोड़ी पैडिंग भी ऐड कर देते हैं, 1 आरईएम, और इमेजेस की विड्थ थोड़ी-सी कम कर दो, 15 आरईएम कर दो। ठीक है, अब थोड़ा आने लगा वो। ठीक है, इमेजेस और छोटी करनी पड़ेंगी मेरे हिसाब से। ठीक है, 10 कर देते हैं, राइट। अब आपके पास सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने कॉलम दिया है, गैप भी दे देते हैं यहाँ पे। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, यहाँ पे गैप दिया जाएगा 1 आ रही है। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी, ओके। इन कार्ड्स पर होवर लगा सकते हो, बॉडी में थोड़ी-सी पैडिंग डाल दो। ठीक है, अब स्टाइलिंग आप जितनी करो उतनी कम है। ठीक है, स्टाइलिंग कितनी भी करते रहो वो तो कम ही लगती है हमेशा, है ना? और ठीक है, अच्छे दिख रहे हैं मेरे मूवी के कार्ड्स। और अब क्या कर सकते हैं इनमें, होवर इफ़ेक्ट डाल सकते हो। ठीक है, सो कहाँ है मूवी कार्ड? तो डॉट मूवी कार्ड होवर हमें स्केल करना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो देखो अब मेरे स्केल हो रहे हैं मेरे मूवी कार्ड्स।
राइट, मैं जब भी उन पे होवर कर रहा हूँ। इमेजेस को लिंक्स बना सकते हो, इमेज पर क्लिक करेंगे तो उसका ट्रेलर खुल जाए ऐसा करके। ठीक है, सो वही है जितना बनाते जाओगे उतना कम है, ठीक है। सारे डेटा का यूज़ करोगे तो बहुत टाइम लगेगा बनाने में, उसमें बहुत सारा डेटा आ रहा है, इमेजेस भी आ रही है और क्या बोलते हैं भी आ रहा है, रेटिंग भी आ रही है, बजट भी आ रहा है, डायरेक्टर्स भी आ रहे हैं, कास्ट भी आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन भी आ रहे हैं, तो वो अनलिमिटेड डेटा है, समझे? हाँ, गुड इवनिंग। इज़ इट फ्री? आई वांट यूट्यूब एपीआई एंड मूवी वेबसाइट एपीआई। फ्री है। एवरी टाइम 250 मूवीज़ विल कम सेपरेटली, यस। ठीक है, सुन रहे हो कि नहीं आप लोग? बचे कि नहीं लोग? भाग गए क्विज़ देने, सर्टिफिकेट लेने। ठीक है, मुझे लगता है अब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो काम खत्म हो सकता है। ठीक है, बना के देख सकते हो, समझे? ठीक है, अब किसी को मुझसे कोई डाउट है तो पूछ सकता है और अदरवाइज़ वी विल wrap up this session. सेपरेट ही आएँगी मूवीज़, जितनी बार भी कोड को चेंज कर दो। प्लीज़ डू फ्रंट एंड सेशन सर विथ रिएक्ट एंड सीएसएस। हो चुका है एक फ्रंट एंड सेशन, पहले मैंने लिए हैं, 2 हो चुके हैं रिएक्ट के ऊपर। ओके, यस सर। ठीक है, और लोगों को कोई डाउट है तो वो मुझसे क्लियर कर सकते हैं और अदरवाइज़ वी विल रैप अप दिस सेशन। Sir, can you provide front-end developer internship? Yes. Full stack project, sir. Yes. मिल जाएँगे फुल स्टैक प्रोजेक्ट। रिज़्यूमे के लिए फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाने हैं तो कोई बड़े एप्लीकेशंस बनाओ, ठीक है? यूट्यूब जैसा कुछ, नेटफ्लिक्स जैसा कुछ, कोर्सेरा, यूडेमी जैसा कुछ, ठीक है? तब जॉब मिलती है, ठीक है? छोटे-मोटे प्रोजेक्ट को कोई नहीं देता है जॉब। सर, दिस क्विज़ इज़ टुडे, इट इज़ मैंडेटरी टू कंप्लीट इट। यस, क्विज़ नहीं दोगे तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। हाउ एंड वेयर? क्या हाउ एंड वेयर? Sir, any internship is available in Chandigarh? No idea. How to attempt quiz in link? Click on the link. You will be redirected to quiz. Sir, please give me a answer. I have already given you the answer. How can I apply for an internship in front-end developer? Make projects. क्विज देना ज़रूरी है। हाँ, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा नहीं तो। तुम्हारी 1 घंटे की मेहनत बर्बाद चली जाएगी। सर्टिफिकेट के लिए ही आते हो ना तुम लोग। ठीक है। आई एम बिगिनर सर, व्हाट शुड बी अप्रोच? अगर आप बिगिनर हो तो फ्रंट एंड में जाना पहले एक अच्छा अप्रोच है, ठीक है? फ्रंट एंड थोड़ा ईज़ी होता है सीखने में भी और करने में भी, राइट? लेकिन फ्रंट एंड के जब फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं, रिएक्ट हुआ, एंगुलर हुआ, वहाँ पर थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, लेकिन फ्रंट एंड हो जाता है। हाउ कैन आई गेट सर्टिफिकेट फॉर दिस क्लास? गो टू द क्विज़ लिंक इज़ पिन्ड इन द चैट बॉक्स। नो सर, आई एम अटेंडिंग द क्लास। Yes, you are attending the class, go and attempt the quiz. सर, आज ही क्विज कंप्लीट करना ज़रूरी है। हाँ, ये क्विज बंद हो जाती है। ठीक है, क्लास अब हो चुकी है, सिर्फ़ अब डाउट्स पूछ सकते हो आप। ठीक है, मैं भी जाने ही वाला हूँ अभी 2-5 मिनट में, राइट। ठीक है, उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन तो मैं देना ही भूल गया, ठीक है, मैं कौन हूँ?
ठीक है? तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मैं कौन हूँ, लेकिन ठीक है, जान लो कि कभी किसी ने कुछ सिखाया था बोलने को हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेरी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल पे जा सकते हो और क्या बोलते हैं, ठीक है, मैं डाल देता हूँ अपनी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, सो ये मेरी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। व्हेन यू विल प्रोवाइड क्विज़, क्विज़ इज़ ऑलरेडी इन द चैट बॉक्स। पिन पिन मैसेजेस देखो अपने। हाँ, आज ही क्विज़ कंप्लीट करना ज़रूरी है, नहीं तो बंद हो जाती है क्विज़ आज के बाद। Okay, I guess there are no more doubts, so we can wrap up this session. Not opening quiz, sir. ठीक है, मैं देखता हूँ ज़रा कैसे ओपन नहीं हो रही है तुम लोगों से क्विज़। एक क्विज़ ओपन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मैं अभी तुम्हें स्क्रीन शेयर करता हूँ, हो रही है या नहीं। सर बताएँ नहीं, फ्रंट एंड डेवलपर के लिए इंटर्नशिप कहाँ से करें? ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर के लिए इंटर्नशिप वही है कि ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा। अगर आप किसी अच्छी सिटी में हो, दिल्ली वगैरह, पुणे, मुंबई, ठीक है, तो वहाँ पर आप ऑफ़लाइन ड्राइव्स में बैठ सकते हो, लेकिन अगर आप कोई रिमोट लोकेशन पे हो, आपको ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा और किसी इंटर्नशिप में सेलेक्ट होने के लिए आपको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, खुल तो रही है क्विज़, कौन बोल रहा है क्विज़ नहीं खुल रही है? ठीक है, कौन है ये लोग जिनसे क्विज़ ही नहीं खुल रही है? ठीक है, सब चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पर क्विज़ कंप्लीट करोगे और सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा। क्या डाउट पूछते रहते हो इतनी बार, क्विज़ कैसे होगी? सर्टिफ़िकेट कैसे मिलेगा? सब कुछ तो इतना सिंपल है। ठीक है, सो अगर आपको नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हैं। ओके, मैं भी लीव करता हूँ। सो थैंक यू फॉर बीइंग माय ऑडियंस। ओके, सो हैप्पी कोडिंग गाइस।